Student, in this question, we have to find the curvature at the point r theta on the curve theta is equal to a inverse r square minus a square whole power 1 by 2 minus cos inverse a by r. आप देख सकते हैं यहाँ गिवन कर रहा है थीटा इज इक्वल टू a टू द पावर माइनस वन ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल पावर 1 by 2 minus cos inverse a by r. This is the polar equation because this equation is in terms of r and theta. आप देख सकते हैं ये कर्व की इक्वेशन r और थीटा के टर्म में है, तो ये पोलर इक्वेशन है. और वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो हियर वी यूज फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पोलर इक्वेशन. So first we write here theta is equal to a to the power minus 1 multiplied by r square minus a square whole power 1 by 2 minus cos inverse a by r. Now first we find here dr by d theta. So we differentiate with respect to r here. So we write d theta upon dr is equal to a to the power minus 1, this is constant, and d by dr of r square minus a square whole power 1 by 2 minus d by dr of cos inverse a by r. आप देख सकते हैं गिवन कर्व को डिफरेंशिएट कर रहे हैं r के रिस्पेक्ट में, इसलिए ऑपरेटर यूज कर रहे हैं d by dr. तो d थीटा by dr is equal to a की पावर माइनस 1 कांस्टेंट है, so it will be outside the differential operator, and r square minus a square whole power 1 by 2 minus d by dr of cos inverse a by r. Now we know that differentiation of root x with respect to x is 1 upon 2 root x. So we when we differentiate this square root of r square minus a square, so this can be written as 1 upon 2 under root r square minus a square. And now we differentiate this r square minus a square minus, and differentiation of cos inverse x with respect to x is minus 1 upon under root 1 minus x square. So this is minus 1 upon under root 1 minus a square upon r square. Now we differentiate this a upon r with respect to r. So a is constant here, and differentiation of 1 upon r is minus 1 upon r square. So this is a to the power minus 1, and differentiation of r square with respect to r is 2r, and differentiation of a square is 0 because a square is constant. So this is 2r divided by 2 under root r square minus a square, and this minus minus plus multiply, and this a and taking LCM in this square root, so we get here under root r square minus a square divided by, when we take LCM r square, so square root of r square is r here, and this is here 1 upon r square. So this square cancel by this r, so this is 2 cancel by this 2, and this r, when we when this a to the power minus 1 goes to the denominator, this power will be positive, so a to the power 1 under root r square minus a square minus a upon r under root r square minus a square. आप देख सकते हैं यहाँ पर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 1 अपॉन 2 रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा. फिर आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में 2r होगा, जबकि ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में 0 होगा क्योंकि ए स्क्वायर कांस्टेंट है. अब cos इनवर्स a बाई आर का डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होगा. फिर a बाई आर का डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो a कांस्टेंट होगा, और 1 अपॉन आर का डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर होगा. नाउ दिस 2 कैंसिल बाय दिस 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और इस a की पावर माइनस 1 को जब हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो इसकी पावर प्लस 1 हो जाएगी. सो r अपॉन a अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. अब इसमें एलसीएम लेंगे स्क्वायर रूट में तो ये अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, और आर स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट लेंगे तो r होगा, और 1 अपॉन आर स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई होके. अब आप देख सकते हैं ये a अपॉन r अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. नाउ वी टेकिंग एलसीएम हियर, so we write here a r under root r square minus a square. So this cancel by this, so we get r multiplied by r, this is r square, minus this r under root r square minus a square cancel by this a multiplied by a, we get a square. So this is d theta upon
dr. Now this r square minus a square, if this under root r square minus a square cancel by this, so we get here under root r square minus a square upon ar. So this is d theta by dr. Now we find out reciprocal of this. So dr upon d theta is equal to ar divided by under root r square minus a square. This is dr by d theta. आप देख सकते हैं d theta by dr is equal to under root r square minus a square upon ar है. इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये ar upon root r square minus a square. Now we find differentiation of this with respect to theta. Differentiate with respect to theta. So we get here d2r by d theta 2. Here a is constant, so we write here d by d theta of r divided by under root r square minus a square. Now this can be written as d2r by d theta 2 is equal to, here a is constant, using quotient formula of differentiation. So we write first denominator, that is under root r square minus a square. Now differentiation of numerator, that is dr by d theta, minus numerator, that is r. Differentiation of denominator, that is d by d theta of root r square minus a square upon denominator square, that is r square minus a square. आप देख सकते हैं यहाँ फार्मूला यूज करेंगे जब डिफरेंशिएशन का, तो पहले डिनोमिनेटर लिखेंगे अंडर रूट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, फिर d बाई डी थीटा होगा न्यूमरेटर का यानी r का, माइनस न्यूमरेटर दैट इज r, और फिर डिफरेंशिएशन होगा अंडर रूट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो रूट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा. तो d2r by d theta 2 is equal to a, and this under root r square minus a square. Now putting here value of dr by d theta, that is ar divided by under root r square minus a square minus r, and differentiate this r square minus a square with respect to theta. So this can be written as d by dr of under root r square minus a square multiplied by dr by d theta, and this r square minus a square can be written as r square minus a square here. So this under root r square minus a square cancelled by this, so d2r by d theta 2 is equal to a upon r square minus a square, here ar minus, when we differentiate this root r square minus a square with respect to r, so we write here 1 upon under root 1 upon 2 under root r square minus a square, and this differentiation of r square minus a square with respect to r is 2r, and putting here value of dr by d theta, so dr by d theta is ar divided by under root r square minus a square. आप देख सकते हैं यहाँ पर जब हम अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको लिखेंगे डी बाई डी आर ऑफ अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इनटू डी आर बाई डी थीटा, फिर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, फिर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में, और ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा. डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू ए आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया. Now this 2 cancel by this 2 here, and we can see here this r is this ar is common in both the terms, so we take common, so we write here a square r divided by r square minus a square, and in this bracket 1 minus, and this r multiply we get r square, and this under root r square minus a square multiplied by r square minus a square, so we get r square minus a square. आप देख सकते हैं जब अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, और दिस आर इनटू आर ये आर स्क्वायर हो जाएगा और ये आर कॉमन हो जाएगा. नाउ वी टेकिंग हियर एलसीएम इन दिस ब्रैकेट, सो वी राइट हियर ए स्क्वायर आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है. So this minus a square, this minus r square cancelled by this minus square, so we get here minus a square, so this multiplied by a square multiplied by a square, we get a to the power 4 r divided by this r square minus a square, this r square minus a square, we get r square minus a square whole square. So this is d2r by d theta 2.
Now we apply formula for the radius of curvature of polar equation. So we write here. Formula, that is rho is equal to r square plus dr by d theta whole square whole power 3 by 2 divided by r square plus 2 dr by d theta whole square minus r d2r by d theta 2. This is the formula for the finding the radius of curvature of polar equation. So we put here value of dr by d theta. So we write this rho is equal to r square plus dr by d theta is here, ar upon root r square minus a square. So squaring this, we get here a square r square divided by r square minus a square. Because on squaring, this square root sign will be cancelled out. So a square r square upon r square minus a square whole power 3 by 2. Divide by here r square plus 2 dr by d theta whole square. This is a square r square divided by r square minus a square minus r multiplied by d2 r by d theta 2. So this minus and this minus multiplied, this gives plus, and this r multiplied by r square. So a to the power 4 r square divided by r square minus a square whole square. So in the numerator we take LCM here. So this is r to the power 4 minus a square r square plus a square r square whole power 3 by 2 divided by this r square minus a square whole power 3 by 2. And in the denominator we take LCM here. So this is r square minus a square whole power 2. So this r square multiplied by r square minus a square whole square plus this r square minus a square whole square divided by r square minus a square, we get r square minus a square, which is multiplied by 2a square r square. So 2a square r square multiplied by r square minus a square plus here a power 4 r square. So we can see here this row, this minus a square r square cancelled by this a plus a r square and r to the power 4 whole power 3 by 2. So this 4 cancelled by 2, 2 to the 4 and 2 multiplied by 3, this is r to the power 6. Divide by here this r square minus a square whole power 3 by 2, this goes in the numerator here. So this is r square minus a square whole square, and here in this bracket we can see r square, this r square and this r square taking common here, and here r square minus a square whole square, we open this bracket, a minus b whole square, this is r to the power 4 plus a to the power 4 minus 2a square r square plus here we take common this r square. So 2a square multiplied by r square, so we get 2a square r square and 2a square multiplied by minus a square, so this is 2a to the power 4 plus we take common here r square, so we get here a to the power 4. Now we can see this minus 2a square r square cancelled by this plus 2a square r square, and here this r square cancelled by power 6. So we get here 4, so r to the power 4 here, and this power 2 and this power 3 by 2, subtract this power, so we get here r square minus a square power 2 minus 3 by 2, divide by here this r to the power 4, here we can see this a to the power 4 plus a to the power 4, this is 2a to the power 4 cancelled by this minus 2a to the power 4, so we get here r to the power 4. Now this r to the power 4 cancelled by this r to the power 4, and when we subtract this 3 by 2 by 2, so we get 2 to the 4 minus 3, that is 1 by 2. So rho is equal to under root r square minus a square. So this is the radius of curvature of the given curve theta is equal to a to the power minus 1 under root r square minus a square minus cos inverse a by r. Thank you.